Hello and welcome everybody. The class has started. Yes, indeed. And I welcome you back to the yet another fun session of block programming. And I'm Vasundhara Sharma, mentor at Coding Blocks Junior. Okay, so now today's session is going to be magic. Just like the name of the thumbnail in the title, it's like magic spirals. So we are going to make obviously magic spirals. Yeah. But how? Which concept? Can you see it? Which concept we are going to use? For loops. है ना? For loops we are going to use. So let's see how to make. We have done so many things in Artist Lab and they are amazing, है ना? कितना सुंदर we have designed in that. So now let's see what else we could do in Sprite Lab. Artist Lab. So no, first thing is, what are for loops? We have already studied loops, which is repeat loop, and there is while loop. Yeah. So, but we have to learn what is for loop and how to make a spirals. Now, see, today I'm going to teach you two concepts. First is variables. We are going to revise that, and with the help of variable, we are going to learn what is for loop. Okay. With the name, it is saying that it's a loop. But can anyone explain me what is the loop? What do we understand by loops? Okay, hi Akriti. Siddharth, Sambhavi. Hi Sambhavi, Afya. Shaurya Tiwari. Hello. Okay, tell me, explain me what are the loops. It repeats. Nice, Sana. The circle, Megha. We can say that. Nice. Loops means doing something again and again. Shiban, amazing. Oh, just right, repeating something. Some mixture to repeat something. Yeah, I guess you all get the idea. Hi, Navanita. Okay, you can be number of times, but let's say this is my second last class and it is going to end soon. So let's see what happens. Okay, now we are going to learn a concept of for loop. Yeah, and before that, I want to ask to you everything, one thing, that what if I want to make a like a figure, or I can say something like figure, yeah, figure only. I want to make a figure, लेकिन उसमें कुछ conditions है, and those conditions are like, see, I'm just going to place it here. So उसमें कुछ conditions है. They are like, I want to make a spiral. ठीक है, but I want कि वो जो मेरा artist lab है, जब वो move forward होगा तो वो like थोड़ा सा move forward हो. ठीक है, then I want कि वो turn हो जाए, वो move forward हो थोड़ा सा, like let's say 5 pixels, and then वो turn हो जाए in a left direction. Okay, then it got turned in left direction. So वो अपने left direction में turn हो जाएगा. I also tell him degrees. So somehow degrees वो turn हो जाएगा. Now this is a symbol of degree. So somehow कुछ degrees turn हो जाएगा. Then I want again to move him like इसमें से +2 pixel और कर दो. जो भी ये value है इसमें +2 pixel और कर दो. तो क्या हुआ आंसर 7. I want कि वो next time जो चले वो 7 pixel चले. Okay, now I want कि वो again same turn ले ले, same degree का turn ले ले. Let's say मैंने लिया यहाँ पे 99 लेते हैं, मैंने लिया 99 degrees का turn. Okay, then again I want कि वो पहले 5 pixel चले, then 7 pixel चले, then again 99 degree का turn ले, and then वो 9 pixel चले. 9 pixel is what? Like 7 plus में 2. That is the only 9 pixels. That's how it comes. Okay, so ये 9 pixel चले, and then again वो turn ले ले 99 degrees का. So see, it is loop, है ना? We can take it in
इन अ लूप, हम इसको एक लूप में रख सकते हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू टेल कंप्यूटर इज कि जब भी आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हो और कुछ पिक्सल्स का टर्न ले रहे हो तो उसमें +2 कर दो बस। ओके इस वैल्यू में +2 कर दो बस, एंड उसके बाद आपको टर्न लेफ्ट होना है। सो इस पूरे को मैं एक लूप में रख सकती हूँ एंड अपने कंप्यूटर को बता सकती हूँ लाइक हाउ मेनी टाइम्स आई वांट दिस थिंग टू हैपन। लाइक ये अभी 3 टाइम्स हुआ, आई वांट दिस थिंग टू हैपन 10 टाइम्स। ओके कि वो आगे चले 5 पिक्सल्स देन टर्न हो जाए, देन वो 7 पिक्सल्स चले देन टर्न हो जाए, देन वो 9 पिक्सल चले देन वो टर्न हो जाए, देन 11 आता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 प्लस में 2 7 आ गया, 7 प्लस में 2 9 आ गया, 9 प्लस में 2 11 आ गया। सो एक तरीका तो ये है कि हम इसमें वेरिएबल्स लगा सकते हैं, है ना। कैसे कि पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लाइक आई टेल माय कंप्यूटर, इसमें करके देखते हैं यहाँ पे, आई टेल माय कंप्यूटर टू टेक अ वेरिएबल, इसको ना अभी हटा देते हैं। आई टेल माय कंप्यूटर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, लेट्स से सेट आई टू 0, 0 और 5, ठीक है, स्टार्टिंग में 5 लेते हैं, आई वॉन्ट इट टू बी 5, ठीक है, एक वेरिएबल है 5। अब आई वॉन्ट मैं ना एक लूप ले आती हूँ, सिंपल लूप, ओके वेयर द लूप्स हियर, रिपीट लूप सिंपल वाला ले आई मैं। अब मैं यहाँ पे इसको बोलूंगी रिपीट टाइम्स कितना करना है, 10, दिस इज माई जस्ट गेस, ओके। अब आपको करना क्या है, मूव फॉरवर्ड करना है, ओके I'll go and pick it a move forward, and यहाँ पे मेरे को ना फर्स्ट टाइम में 5 पिक्सल मूव फॉरवर्ड करना है। देखो मैं सिंपली करके दिखाती हूँ पहले, ठीक है। मेरे को क्या करना है, अपने आर्टिस्ट को मूव फॉरवर्ड कराना है फर्स्ट टाइम 5 पिक्सल्स, सो दैट वो थोड़ा इतना चले, ठीक है। देन आई वांट कि वो टर्न हो जाए लेफ्ट, हाउ मेनी डिग्रीज, लेट्स से 99 डिग्रीज, ठीक है, इतना टर्न हो गया। देन आई वांट कि वो अगेन मूव फॉरवर्ड हो जाए, ओके एंड 5 डिग्री नहीं, इस बार वो 7 डिग्री मूव फॉरवर्ड हो जाए, एंड देन अगेन सेम टर्न हो जाए। सो ये सिंपलेस्ट मेथड से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी रिटर्न में, या तो दैट इज द थिंग, इतना ये चीज हो गया। अब आई वांट कि वो 9 देखो कैसे चला वो, है ना। अब अगर मैं इसको अगेन टर्न लेफ्ट करती हूँ एंड अगेन मूव फॉरवर्ड करती हूँ लाइक 2 पिक्सल मोर करके, तो इतने सारे कोड्स लिखने का क्या फायदा, है ना। व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट रिपीट, इन सबको एक रिपीट लूप से रिप्लेस कर देते हैं, जस्ट इसको बताते हैं कि मूव फॉरवर्ड होना है आपको फर्स्ट टाइम 5 पिक्सल, और 5 पिक्सल का नंबर जो है वो मैंने एक वेरिएबल को दे दिया, राइट। तो अब मैं नंबर यूज करूं या वेरिएबल यूज करूं, एक ही बात हुई। तो मैं क्या करूंगी, वेरिएबल्स में जाऊंगी, where my variables, and I'll choose the same variable as I declared it first, तो इसको यहाँ पे लगा दूंगी 0 की जगह, नंबर की जगह वेरिएबल पुट कर दिया। Now I want it to turn left, okay how many degrees, 99 degrees, that's a guess, डिग्रीज हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। I want it to turn left, now I want कि जब वो नेक्स्ट बार ये चीज चले, now see इसने ये 10 टाइम्स ये कर दिया, अगर मैं इसको 2 टाइम्स करती तो ये इतना चल रहा है ना, इसने 10 टाइम्स ये कर दिया, ही मेक्स अ डॉट, वो एक ही जगह घूमे जा रहा है क्योंकि वो 5 पिक्सल से चल रहा है। नाउ आई वांट कि जब ये पहला स्टेप करे फिर दूसरा स्टेप करे, देन उस कंप्यूटर हमें बताए कि अब ये जो आई पिक्सल्स है उसको +2 कर दो। So we can do one thing, we can go on variables, we can set the I, और मैथ में जाके जैसे हम स्कोर्स बढ़ाते हैं, whenever it get touch, तो स्कोर्स बढ़ा दो, है ना। I'll just make it I +2, I क्या था हमारा स्टार्टिंग में 5, और I में प्लस कितना करना है 2, तो अब क्या होगा, see what happens, it becomes a spiral, है ना। सी व्हाट हैपेंस, अभी वो पहले कंप्यूटर हमारा ये देखता है कि पहली कमांड उसकी ये है मूव फॉरवर्ड, देन वो देखता है उसकी दूसरी कमांड है 99 डिग्री टर्न होने की, देन वो देखता है कि उसकी तीसरी कमांड आती है कि जो भी आई सेट था पहले उसको 2 प्लस कर दो, तो अब वो 5 को 7 कर देगा, तो दैट सेम थिंग हैपनिंग। और अब मैं इसको 20 से 200 करती हूँ, वाओ
कैन यू सी दिस, है ना? So this is a method to make it like with the variables, make a spiral with the variable, and let's make it colorful. Brush में जाओ and let's take this random color and see what happens. If I do it random color, repeat के बाहर, repeat loop के बाहर, wow, it was amazing. Yeah, repeat loop के बाहर रखती हूँ तो सबका कलर एक ही होता है, but अगर मैं इसको repeat loop के अंदर रखती हूँ तो वो कोड बार बार पड़ेगा, बार बार उसे दिखेगा कि रैंडम कलर रखना है. सी व्हाट हैपेंस, वो बार बार एक रैंडम कलर चूज करेगा एंड उसे दिखेगा कि अब थोड़ा सा ज्यादा चलना है, इतना टर्न होना है, उसको इंक्रीज कर देना, देन रैंडम कलर चूज करना है. सी वो सीक्वेंस में कैसे वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, ऑरेंज हो रही है बाउंड्रीज. ओके, सो वन मेथड इज दिस. अब इसको हम फॉर लूप में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? फॉर लूप क्या होता है? ठीक है, तो फॉर लूप में क्या चीज है, कुछ सिमिलर है तो समझने में आसानी आएगी. ठीक है, वेरिएबल्स जैसे हमने अभी समझा. लेट्स से दिस इज माय फॉर लूप. ओके, ओके वेट, लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर. ब्रशेस एंड लूप्स एंड दिस इज माय फॉर लूप. ठीक है, अब मैं इसको फॉर लूप को रिप्लेस कैसे कर सकती हूँ, मतलब वेरिएबल्स वाला काम इससे कैसे करवा सकती हूँ? हैव एन आइडिया? नाउ सी, इसमें कुछ चीजें होती हैं जिसका समझना जरूरी है. तो एक चीज तो है ये आई. ओके, आई हमने अभी यूज किया which was a variable. यहां पे भी it is a variable. This I is a variable. ओके, जो हमने काम किया फॉर लूप सिमिलरली वही काम करता है. ओके, एंड देन द फर्स्ट ब्लैंक, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क इज स्टार्टिंग पॉइंट. Start point. Okay, and then second is end point. Okay, that means for I, for this variable from starting point, जैसे हमने अभी लिखा 5 से लेके, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसमें 5, है ना? 5 था स्टार्टिंग पॉइंट. 5 से लेके आई वांट कि वो ये वाली जो चीज है एंड पॉइंट, ये ना कभी भी हम खुद से वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ट्राई एंड टेस्ट चीज होगी, ये चीज होगी ट्राई एंड टेस्ट वाली चीज. ठीक है, दिस एंड पॉइंट इज ट्राई एंड टेस्ट, टीटी लिखते हैं इसको. ठीक है, तो हमें कभी भी नहीं पता, लाइक मैंने 20 रखा था पहले एंड देन उसको 200 कर दिया, तो मेरे को करके ही तो पता चला कि 20 से इतना होता है, 200 से इतना होता है ना, तो हम ट्राई एंड टेस्ट करेंगे. अब काउंट बाय क्या चीज है? इट इज लाइक व्हाट वी एडेड +2 इन एवरी वन ना. तो उसकी टेबल क्या चली थी? इट वाज 2, इट वाज 5, देन इट बिकम 7, देन इट वाज 9, देन 11. सो ये भी इट्स लाइक अ टेबल, इस सब में ऐड हो रहा है +2. या इसमें +2 ऐड हो रहा है सब में. तो अब ये जो काउंट बाय है इज द सिमिलर थिंग, कि हम क्या चीज ऐड करना चाहते हैं, कितनी चीज ऐड करना चाहते हैं. ओके, तो ये आपको समझ आया? दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट, दिस इज माय एंड पॉइंट, एंड दिस इज माय काउंट बाय. लाइक वी कैन से टेबल, कितने से हम ऐड कर रहे हैं, कितने से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये चीज होती है. कौन सी टेबल हम चलाना चाहते हैं. ओके, तो अब इसका काम करके देखते हैं कि क्या होगा. इफ आई प्लेस इट हियर इंस्टेड ऑफ, अब देखो इसमें क्या चीज है, इसमें ना मेरे को कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फॉर लूप वो हमारे लिए करके रखता है. ओके, एंड सिमिलर चीज करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है? 5, क्योंकि हमने यहाँ पे आई भी डिक्लेयर किया था, 5 रखा था. इनफैक्ट दैट्स ऑन यू, इसको हम 10 रख देते हैं. 10 रख दिया, एंड देन आई वांट टू मेक इट 200. ठीक है, 200 रख दिया. अब जो काउंट बाय है उसको आप कुछ भी रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो. लेट्स से 5 ले लिया. ठीक है, नाउ ये चीजें कर लेते हैं हम. मूव फॉरवर्ड का ब्लॉक, और यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे हम, क्योंकि ये चीज भी वेरिएबल है. सी, तो जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे सेम वेरिएबल आएगा.
एंड देन टर्न करते हैं उसको, एंड दैट्स इट। बस ये चीज करने की जरूरत है हमें। इसमें क्या जरूरत नहीं पड़ी, वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि वेरिएबल को कितना करना है, कितना ऐड करना है, वो हमने एक लाइन में ही बता दिया। नाउ सी, ये वाला कोड ये काम करेगा, मूव फॉरवर्ड एंड दिस थिंग। ओके, नाउ सी द मैजिक। अभी मैं इसको रैंडम कलर रखती हूँ अगर इन द स्टार्ट, सो इफ आई डू दिस डिग्री, तो मैजिक क्या था इसमें, this is the magic. Okay, now this thing is the magic. Can you see it is rotating like fabulously? If I do it 500, wow, 400. So if I rotate this part, so it is looking so beautiful. It's a different kind of animation. Every single turn, like see, अगर ये यहाँ पे 183 है तो 180 पे कुछ और होगा, 182 पे कुछ और है, 183 पे कुछ और है। सिर्फ एक डिग्री से, एक डिग्री से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? Isn't this beautiful? Yeah. So now you understand the for loop and ये काम कैसे किया। Let's say let's have perfect star। परफेक्ट स्टार कौन सी डिग्री पे आया था, दोबारा देखते हैं। सो एंड सी इट इज टर्निंग सो ब्यूटिफुली। देयर आई गेट इट। ओह आई लॉस्ट इट। ठीक है, यू गॉट इट, है ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल के भी दे सकते हो इसको, लाइक 180 टाइप कर दिया, सो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। 180 के टर्न पे, 181 पे इट बिकम्स लाइक दैट। सिर्फ एक डिग्री से you see how beautiful it becomes. Okay, now see, ये चीज है, and if I run this thing, now you can understand it, है ना। पहले वो 5 पिक्सल चला, देन वो सॉरी 10, इसमें 10 चल रहा है एंड 5 का गैप है, तो दिस इज 5 पिक्सल, दिस इज 15 पिक्सल, देन 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 5 की टेबल चल रही है। इतना पिक्सल बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है until it reach to 400. Yeah, you got it. 144. Let me try 144. Okay. Arush. Perfect star. 144. Nice. You got it. 90 से क्या बनता है? Let's see 90 से क्या बनता है? We'll try and test it. Wow. It's amazing. Yeah? Alisha. Amazing. A perfect square. और ये कलर्स देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, राइट। नाउ सी, अगर दिस इज जस्ट लाइंस, लाइक ये सिर्फ मूव फॉरवर्ड हो रहा है और इसमें एक डिग्रीज का खेल है, सिर्फ डिग्रीज का खेल है टर्न होने के लिए, है ना। बट व्हाट इफ आई जस्ट मेक वन मोर, इफ आई जस्ट मेक इट मूव फॉरवर्ड वन मोर टाइम, क्या होगा। लेट्स सी, कॉपी पेस्ट करते हैं एंड लेट्स मेक इट मूव फॉरवर्ड वन मोर टाइम एंड समथिंग एल्स शेप। और अगर मैं इसको ट्राइंगल की शेप देना चाहूँ, लाइक आई डू इट 120, wow, it becomes so big. 200. Yeah. Now see, you know the code of triangle. We can make it move. If it see what happens with a turn of 120, it becomes a triangle. If I take it one more time, it becomes a triangle like that. Amazing. And what if I do it like okay, let's experiment something. If I make it move forward, I plus may 2. Okay. 6. Nice. It is amazing. Okay. If I don't use it, it is like that. And if I use it, it is like that. Nice. I like it. Okay. So you can experiment. I want you all to experiment. Now see, अब ये जो हमारा टाइटल था,
हम उसके जैसे थंबनेल पे था, हम उसके जैसे भी बना सकते हैं। 144 सा ना, ठीक है। जो हमारा टाइटल था हम उसके जैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें कलर्स थे बहुत ब्यूटीफुल, तो कलर्स कैसे सेट करते हैं ये देखते हैं। ओके, ब्रशेस में जाएंगे, सेट कलर्स लेके आते हैं। ओके, नाउ सेट कलर्स, आई एम जस्ट सेटिंग अ कलर हियर एंड उसको देखो what will happen here. You know the red, green and blue are primary colors. Yeah, they are the primary colors basically. Red, green and blue, you know. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं रेड और ग्रीन को मिक्स करूंगी तो कौन सा कलर आएगा? एंड कैन यू सी कि मेरा आर्टिस्ट जो है वो रन कर रहा है और कुछ भी नहीं बन रहा। हाँ, इट रन्स, इट इज मेकिंग, बट कुछ नहीं दिख रहा हमें। दैट्स बिकॉज ये सारे कलर सेम अमाउंट में मिक्स करे हुए हैं, एंड सेम अमाउंट में मिक्स करने के बाद प्राइमरी कलर्स व्हाइट बन जाते हैं। ओके, एंड मेरे को बताओ कि रेड और ग्रीन को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ग्रीन? नो, रेड एंड ग्रीन को अगर हमने मिक्स किया, रेडिश ग्रीन, व्हाट इज दैट कलर अनुरीत? No, brown. Sana is saying brown. Namonita is also saying brown. Okay, let's have an experiment. अगर मैं रेड और ग्रीन को मिक्स करती हूँ, that means मैं ब्लू वाला ब्लॉक हटा देती हूँ. It becomes yellow. हाँ, red and green, if I mix them together in a same amount, then they becomes yellow. Amazing. And what if I just, okay, this is red, obviously this is red, and what if I just mix some amount of uh, green, like say 150, so now it becomes some orangish and brownish. So you get it now, you get it the concept. हम कितने भी अमाउंट में कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, and that give me some hint. Let's take it 220. It is yellow basically, huh? So you know. And what if I mix green and blue? What the green and blue color will give us? Wow, it is so purple. That's my favorite color in here. It become purple. Yeah, so see what happens when I mix red in this amount and I mix green in this amount and I mix blue in this amount. So it gives me this purplish pinkish color, and which I think is so amazing. So we can try and test. Yeah, yeah. Pink, है ना? Okay, that is आपको ये pink दिख रहा होगा, but it is like slightly purple for me. मेरी स्क्रीन पे, ठीक है. Now see what happens if I remove the red. Green और blue कौन सा कलर देते हैं? Green and blue कौन सा कलर देते होंगे? So I hope आपको अपना होमवर्क समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा. That what you have to do, you have to experiment a lot of it. A lot of it you have to experiment. A lot of it with the colors, with the degrees, and with the steps. Okay, so you have to experiment a lot of it. Aqua cream. Okay, let's see. Yeah, that's like indigo bluish color. If I do it like 255. Ooh, okay. That's quite a color. Greenish. Okay, that's it. Green color looks like that. Now see what happens. Achha, what happens if I do it 100? I think it's maximum. It's dark color. It's black and it just turned into it. Okay, the maximum is 255. Not okay. That's it. So now what you have to do, you have to experiment a lot of it. Yeah, and I want you to make a color which is your favorite, like favorite wala color. I want you to make. That is some purplish. And what if I do it 200?
That is now pinkish. So you have to experiment and make your own color. Let's search on web कि आपका color कैसे बन सकता है ना? And ये मेरे को pink दिख रहा है and screen पे it is like light red. Okay, there is difference. So now और क्या चीज कर सकते हैं? Let's experiment more on the brushes. We got it. Yeah. We can draw a sticker in the end. It draws it here. And what if we draw it in beginning? So it hides. So you have to experiment kahan pe banana. And what if I draw it in the middle? What happened? Yeah. So what it will do, it will move forward, make the elephant move forward and then make the elephant. And that's how it created. It's an elephant in the room. And if I choose a peacock, it seems so beautiful. And यहाँ पे कुछ functions भी हैं. Let's choose some functions. Star, draw a star. I want to draw a star in the end. ठीक है, points. Star में कितने points होते हैं? Like 1, 2, 3, 4, 5. 5 points होते हैं एक star में. ठीक है, तो I'll just make a number here and copy paste this block and paste it here. So मुझे क्या करना होगा? मेरे को 5 points वाला star चाहिए in the end. And I want it like 50 pixels. So see where it becomes here. Here it comes. If you can see. तो ये उसी के same color में आए. But I want कि वो कुछ different color में आए. So I'm choosing a color by my own. It becomes red. But I don't want a red. Let's see. Orange. Yeah. Okay. And I don't want it here. I want it here. Somewhere here. So I want my artist to jump over here and make a star here, there. ठीक है? उसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, there is a block which says jump. Jump to over dash down. Okay, if I use it, now 2 means this thing from here to here. Here to here. तो कितना मैं चाहती हूँ कि वो आगे जाए. आगे जाने के लिए पहला वाला ब्लैंक फिल करना होगा हमें. If I want कि वो 100 पिक्सल आगे जाए तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा. This is 200. This is like 300 and this is 400. And down dash down से तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो कितना नीचे आएगा. Like this is 100, then this is 200. And if I do it 200, 200 तो वो सेंटर में पहुंच जाएगा. I wanted to make it like here. So let's experiment again. If I make 2 इसको कर देती हूँ 350. Oh, it comes here. And इसको थोड़ा सा नीचे कर देते तो down में क्या करे 20? It's making sense. It's looking good. So you can make it jump over to anything, anywhere, and make your star like anywhere. And ये 5 points का है. 4 points का करूँगी तो आपको क्या लगता है क्या बनेगा? That's a plus sign. Okay, that's a plus sign. And 3 points में it's a triangle. Okay, so 2 points में it's a line. 3 में it's a triangle. 4 में it's a plus. 5 में it's a star. And 6 में it's a hexagonal. And similarly, septagonal. And this is a star with some sides. So that's on you. What do you want to make? I want to make this one only. And in this color. So that, and I don't want this sticker. It is looking good like that only. Okay. Yeah. So that's it. That's it for today's class. It's the overview of like Artist Lab. Now you know how to use the for loop. That is the main thing here. क्योंकि actions में you know how to do all these things. Point 2 का डिग्री का मतलब ये है कि वो कहाँ पे घुमाना चाहते हैं, है ना? You know all these things. And then brushes maybe it is also easy. You know all these things. Alpha means कि मैं उसको कितना light and कितना dark करना चाहती हूँ. For I want to use it for the star. Sorry, this sticker. तो मैं इसको क्या करूँगी? 100 is the maximum. If I use this 50, तो ये dull हो गया. But see one more thing कि ये star के लिए भी use हो रहा है क्योंकि ये sequence में use हो रहा है. सब नीचे के लिए सबके लिए use हो रहा है. So I want कि वो star को डल ना करे. तो star से पहले मेरे को इसको दोबारा रखना पड़ेगा and उसको 100 करना पड़ेगा. 100 is the maximum. Okay, now see क्या डल है?
ये peacock, and then क्या उसको highlight करने के लिए I'll make it again 100. Okay, done आकृति. Nice. And then उसके बाद loops में you understand both of them. And now for loop आप try कर सकते हो sprite lab में भी, है ना, वहां पे भी है. You know these block also, and if block का भी use किया हुआ है हमने. And then these are shapes like squares, stars, triangle. More shapes you want to make. There is a house also and a circle. So these are basically outlines. Function में जो use हो रहा है वो outlines है. And pine wheel you can make and draw it. Variables we learned it. And comments it's something you want to add for someone to when they're seeing your code, then they could read. Comments is a block which is not shown on the play area. Screen पे print नहीं होता है. Comment वाला block screen पे print नहीं होता है. It is for someone, जैसे मैं और Orrusa मैम आपका course check कर रहे हैं code, then you can write anything here that this कि आपका आइडिया क्या था ये कोड बनाने का, तो आप पूरा वो चीज लिख सकते हो कि आपने ये चीज क्यों बनाई. You like the star there, you can like it, you can write it. ठीक है, तो ये चीज कौन पढ़ेगा, जो आपके कोड्स चेक कर रहा है. And you can write it. See what I'm writing. That's it. I hope you got it. ठीक है, I'll reset and run it. So आर्टिस्ट लैब में ये बहुत अच्छी चीज है, जो भी हम वेन रन के नीचे रखते हैं वो हमें ऑलरेडी दिख जाता है ना. So that's it. That's all about the artist lab, and you can create number of things you want to do. And that's it for the class. Diksha, nice, amazing. Done, Akriti. Okay, Samiksha, you can send it. Batch will end like in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी, बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट क्लास. उसके बाद एक क्विज आपकी रहती है एंड टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं, एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट क्लास. उसके बाद लास्ट हो जाएगी. ओके, बिकॉज कोर्स ओवर हो गया. यू हैव लर्न एवरीथिंग. That's all for today. आज के लिए इतना ही था. Yes, Anna? Okay. Okay, Ashi. So that's it. And I want you to practice this artist lab. Okay. Have experiment, a lot of things. You are making logos. I'm so proud of all of you that you are making logos and experiment on things. And now use the for loop also and try to make more amazing things here. Okay, I don't know about the third batch. Honestly, I don't know about it. Okay, now your next step would be to give the exam, get the certificate, and then start another course, which could be MIT, App Inventor. Thank you, Sana. Thank you, Ashi. Sambhavi. Okay, so bye-bye everyone, and let's send your creation, your art on Discord also and on Google form also. This will be your 16th assignment. So let's see. Bye-bye.